गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल मेथड्स के जो वीडियोस अपलोड किए थे हमने मेथड्स के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में हमने बात की थी। आज हम उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए चेबेशेव मेथड के बारे में बात करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। चेबेशेव मेथड it is the method to solving the algebraic and transcendental equations। इनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा टूल है हमारे पास ये। हम एक्चुअल में क्या है कि ये मॉडिफाइड मेथड है न्यूटन-रैप्सन मेथड का ही। न्यूटन-रैप्सन मेथड जैसे हम लोग डिराइव करते हैं उसी रूप में हम इसको डेरिवेशन करेंगे और उसी का ही एक अगेन एडवांस रूप है दिस दैट इज कॉल्ड चेबेशेव मेथड। सो let x equals to zeta be a real root of fx equals to 0 of fx equals to 0. This is real root, and let xn be the initial approximation to the root, then expanding fx in the neighborhood of xn by टेलर सीरीज। हम जैसे न्यूटन-रैप्सन मेथड डेरिवेशन करते हैं उसी रूप में। सो fx equals to we know that by expanding the Taylor series f of x plus h. Similarly, h is this, so this is your f of xn plus x minus xn f dash xn plus x minus xn whole square f double dash xn f double dash xn half, okay, this is your half x minus xn f dash xn plus half x minus xn whole square f double dash xn and so on. This is the root. Let x equals to zeta be a real root of fx equals to 0 and xn be the initial approximation. Initial approximation से हम लोग एक approximation of to the roots, then expanding fx in the neighborhood of xn by Taylor series. This is the Taylor series method. So Taylor series की सहायता से हम इसका x equals to zeta पर this is your expansion of Taylor series and in the neighborhood of x. Now neglecting इसमें देखिए now neglecting second and higher terms then हमने इसको नेगलेक्ट करते हैं सेकेंड एंड हायर टर्म्स। so this is equals to fx equals to f of xn plus x minus xn f dash xn. This is neglecting higher terms and this is equal to 0. So this implies x equals to x minus xn equals to f of xn upon f dash xn minus, right? So this implies x equals to xn minus f of xn upon f dash xn. This is equation number 1. X equals to xn minus f of xn upon f dash xn. Thus this next approximation, xn plus 1 equals to xn minus f of xn upon f dash xn. This is your second equation, which is Newton-Raphson method. This is Newton-Raphson method. xn plus 1 equals to xn minus f of xn upon f dash xn. Now for which is the Newton-Raphson method. Now this is the equation number 2. We neglect third and higher order
we neglect from this equation third and higher order. यहाँ second and higher order क्या था, अब हम लोग करेंगे third and higher order. So we have neglecting third and higher order से हम लोगों का क्या होगा, if in this equation, in this first equation, this is second, this is third, if in first we neglect third and higher order, third and higher degree, higher order terms of x minus xn, then we get f of xn equals f of xn plus x minus xn f dash xn plus 1 upon 2 x minus xn whole square f double dash xn equal to 0. मीन्स थर्ड ऑर्डर को हमने रखा है एंड हायर ऑर्डर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया. सो therefore xn minus xn equal to, अब इसको बाकी को हमने ट्रांसफर करेंगे, इक्वल टू माइनस f of xn अपॉन f dash xn plus half x minus xn whole square f double dash xn upon f x dash xn. हमने क्या किया कि इसमें इस टर्म को इधर ट्रांसफर किया, बाकी को उधर ट्रांसफर किया, और उसके बाद हमने इसका माइनस की फॉर्म में और ये डिवाइड कर दिया f माइनस f ऑफ x dash n, ये हमने इसका डिवाइड कर दिया. So therefore then value put करेंगे हम. Now we have putting the value of x minus xn. This is the value of f minus xn. Now putting the value of x minus xn equal to minus f of xn upon f dash xn from 2 from second. ये वैल्यू इसमें पुट करने पर, so this implies we obtain x equals to xn minus f of xn upon f dash xn minus 1 upon 2 f of xn upon f dash xn whole square and f double dash xn upon f dash xn. So this is given by Chebyshev method formula, which is given by as xn plus 1. Next approximation, we have xn plus 1 equal to xn minus an minus 1 upon 2 an square bn, where an equals to f of xn upon f dash xn and bn equals to f double dash xn upon f dash xn. This is your Chebyshev method. So if we have in approximation taking n equal to 0, so we have the value of x1 equals to x0 minus a1 a0 minus half a0 square plus b0, where a0 equals to f of xn upon f dash xn and b0 equals to f of xn upon, this is your whole square n, f double dash xn upon f dash xn. So we have the value, find out the value of root by the Chebyshev method using this is the formula where an and bn are given by in this condition. An and bn, these are the values. So first of all we have find out the value of an and bn, or taking the root
सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पॉजिटिव रूट लेना है और एक नेगेटिव रूट लेना है, और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x0 which is nearer to the real line, nearer to the root, nearer to the root means this is the formula. We have taken an example. Let us suppose एक example हम solve करेंगे. So if fx, find out the smallest value, fx equals to x4 minus 3x cube plus 2x square plus 2x minus 7 equal to 0. So first of all, by the find out the Chebyshev of the third order and compute the result of the by the Newton-Raphson method also. So first of all, fx given है, then f dash x हमने निकाला. This is your 4x cube minus 9x square plus 4x plus 2, और f double dash x equals to 12x square minus 18x plus 4. This is your fx and this is your f dash x and f double dash x. These are the values. So we have to find out the value of the interval. सबसे पहले आपको क्या है कि ऐसा इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है fx में. Let us suppose these values are positive and negative. Means f of a into f of b is always less than 0. First of all, this condition must be satisfied and we have taken a root. So if we have put the value of 2, x equals to 2 raised to 4 minus 3 into 2 raised to cube plus 2 into 2 raised to square plus 2 into 2 minus 7. So this is your 2 raised to 4. So 2 raised to 4 means 16 minus 24 plus 4 to the 8 plus 4 minus 7. So आप देखिए 8 और 16 24 कैंसिल. So this is your minus में 3 means negative. Then f of 2, then f of 3, 3 raised to 4 minus 3 into 3 raised to cube plus 2 into 3 raised to square plus 2 into 3 minus 7. So this is your 81 minus this is again 81. 27 से 81 plus 9 18 plus 6 minus 7. तो 24 में से 7 गया तो अपने पास कितना बच गया 17. तो which is positive. तो first of all f of 2 पे negative, f of 3 पे positive. So we have find out the interval where the roots are lying. This is your 2 and 3. This is the interval. जहाँ हमारे पास इस इंटरवल की वैल्यू आ गई. नाउ वी हैव टेक, क्योंकि हमारे पास क्या है, दिस इज योर चेबेशेव फॉर्मूला. सो चेबेशेव फॉर्मूला मींस व्हेन यू पुट n इक्वल टू 0 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 व्हिच इज x0 minus a0 minus half a0 square plus b0. देन a0 की वैल्यू निकालनी है तो f of x0 upon f dash x0, b0 की वैल्यू निकालनी है तो f double dash x0 upon f dash x0. सो इनकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ x0. So let us suppose x0 is 2.5 means 2 plus 3 upon 2 means 2.5. This is the interval 2 and 3, and then you find out the value by this method, by this formula. So we have first of all you have find the value of xn plus 1. This is the formula of Chebyshev formula. xn1 plus 1 equals to xn minus हमने अभी भी देखा था f of xn upon f dash xn minus 1 upon 2 f of xn upon f dash xn whole square and f double dash xn upon f dash xn. This is your a और दिस इज योर बी. ये अपन ने फॉर्मूले में लिखा है. दिस इज योर ए और दिस इज योर बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a0. दिस इज योर x0. सो a0 जो अपने पास था, a0 इज माइनस f of x0 अपॉन f dash x0. दिस इज योर a0. सो दिस मींस माइनस f of 2.5 अपॉन s 2.5. और these are the values we have put in the value in these terms, f of 2.5 and f dash 2.5, and after simplification or calculation you get this is your values are 2.6875 upon 18.25, which is equals to 0.147260. This is a0.
सिमिलरली b0 इक्वल्स टू क्या हमारे पास में माइनस एफ डबल डैश x0 अपॉन एफ डैश x0, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एफ डबल डैश 2.5 अपॉन एफ डैश 2.5। तो इनको सॉल्व जब हम करेंगे तो दिस इज योर 34 अपॉन 18.25, तो which is equals to 1.863014. So find out the value of x1. x1 equals to x0 minus a0 minus 1 upon 2 a0 square or b0. So this is equals to a0, x0 is 2.5 minus a0 is 0.147260 minus 1 upon 2 into 0.147260 whole square into 1.863014. So after simplification you get 2.332540. 2.332540. So this is the value of x1. Similarly you can find out the value of x2. So taking as x1 इसको ले लें और अगेन इस पे सॉल्व करेंगे तो x1 जब हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो दिस योर x1 f of x1 upon f dash x1 f of x1 upon f dash x1 f double dash x1 upon f dash x1, and then you calculate, simply calculate, and after that find out the values. So we have continued process using this formula. This is called Chebyshev method, and you continue this process, and after you get your root of this equation, transcendental equations. Thank you. इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से आगे बढ़ाना है और सॉल्व करना है. Thanks.